everyone. In worksheet 3 of this chapter, the important questions are related to the train questions. From 5 to 10, all the questions are related to the train concept. And all the questions are very important from 5 to 10 questions. Before we will go for the question, in the previous video, I have explained it. If a stationary object is there in between the moving object whose length is negligible or the dimension is negligible, so distance covered by the moving object will be the length of the train or the length of the moving object. And in between, if the stationary object has some dimension, so length of the moving object to pass that stationary object, if it has some dimension, then the length or the distance covered of the moving object will be length of the moving object plus length of the dimension of the stationary object. ठीक है, अगर stationary object का dimension है तो distance covered by the moving object में stationary object की length add हो जाएगी. और अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो आपका जिसकी डायमेंशन कुछ नहीं है, लाइक द एग्जांपल ऑफ पोल, डायमेंशन नेग्लिजिबल है, तो आपका डिस्टेंस कवर्ड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट विल रिमेन सेम एज द लेंथ ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. दिस कंसेप्ट वी ऑलरेडी टुक इट इन द प्रीवियस क्लास. अब बिफोर वी विल गो फॉर द क्वेश्चंस, आप यहाँ पे अगर देखेंगे किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप उसे 5/18 से मल्टीप्लाई करें. एंड इट्स वाइस वर्सा. इफ द टर्म इज गिवन, यूनिट इज गिवन इन मीटर पर सेकंड और अगर उसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कीजिए टू कन्वर्ट इट इन किलोमीटर पर आवर. आप नॉर्मली भी कर सकते हैं. किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर आपको चेंज करना है, किलोमीटर को 1000 लिया एंड आवर को सेकंड्स में 3600 लिया, तो 1000/3600 अगर आप करते हैं सॉल्व, यू विल गेट 5/18 itself. तो इट विल बी इजी अगर आप 5/18 से ही मल्टीप्लाई कर लो, सो दैट द कैलकुलेशन पार्ट विल रिमेन लिटिल बिट लेस फॉर यू. ओके, come to the fifth question. Fifth question is, a train 280 meter long is running at the speed of 42 kilometer per hour. How much time will it take to pass a man standing on platform? Man है, and man we are taking it as a stationary object and its dimension is not given. So the distance covered by the train will be the length of the train. Okay, so before we will go for the question, यहाँ देखिए speed of the train is given 42 kilometer per hour. Convert it in meter per second because here it is given length of the train in the form of meter. तो आसान रहेगा अगर आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे. So 42 किलोमीटर पर आवर 5/18 से मल्टीप्लाई किया, so you will get 35/3 meter per second. What does it mean? It means the train 35/3 मीटर एक सेकंड में कवर कर रहा है. मीटर पर सेकंड, इट्स अ यूनिट ऑफ फिजिक्स. सो 35/3 मीटर द ट्रेन इज कवरिंग इन 1 second. अब to cross a man, train will cover the distance as I have explained it before. Will be the length of the train because man is a stationary object over here which has no dimension, negligible dimension. So will be the length of the train. Now let the time taken is x second by the train. Question is, how much time will it take to pass a man? So let the time taken by the train to pass a man is x second. Now we will make the block here as we did it in the previous exercises. Distance in meter, time in second. So distance 35/3 meter. This is a distance covers in
1 सेकेंड में, तो 35/3 1 सेकेंड में, तो 280 मीटर कितने सेकेंड्स में, हमें टाइम निकालना है। तो रिमेंबर, जितने भी ये ट्रेन के क्वेश्चंस होंगे दैट विल बी अ डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, आप यहाँ पे अप्लाई भी करके देख सकते हैं, इट विल बी अ डायरेक्ट वेरिएशन। सो इट इज अ डायरेक्ट वेरिएशन। सॉल्व कीजिए, दिस अपॉन दिस इक्वल दिस अपॉन दिस, सॉल्व करेंगे, x वैल्यू यू विल गेट इट एज 24 सेकेंड। सो x विल बी 24 सेकेंड। व्हाट डज इट मीन? Therefore, at the end you will write the answer. Therefore, time taken by train to cross a man equal 24 seconds. Is it clear? किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकेंड में if you have to change it, then multiply it with 5/18. Question 6. Question 6 is given a train 350 meter long. Length of the train is given 350 meter long. So length of the train 350 meter, crosses an electric pole. Time to cross electric pole is 28 seconds. ये दिया हुआ है। Electric pole, again electric pole is a stationary object. Okay, so we will not add the length of the pole in length of a train, distance covered by a train. Now the question is, find the speed of the train in kilometer per hour. Speed of the train in kilometer per hour. So what we will do? First we will convert this in kilometer. 350 को किलोमीटर में चेंज करेंगे. So how will you write it? 350 upon 1000. ये किलोमीटर में आ गया, isn't it? मीटर को किलोमीटर में चेंज किया, it will be upon 1000. एंड सेकेंड्स को करोगे तो what will you get it? सेकेंड्स को आवर्स में चेंज करोगे, so 60 multiply 60, या आवर्स में आ गया. Now the question is speed of the train in kilometer per hour. स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम. So this is the distance, 350 upon 1000 upon time, 28 upon 60 into 60. Speed equal distance upon time. ठीक है? So what we did, हमने उसे किलोमीटर और आवर्स में चेंज कर दिया. अब इसको सॉल्व करते हैं. 350 upon 1000 रिवर्स हो जाएगा upon 28. Okay, so after solving it you will get it as 45 kilometer per hour. तो आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, you will get its answer as 48 kilometer per hour. 45 kilometer per hour. You can do the calculation later on. Is it clear? So this is the speed of the train in kilometer per hour. Therefore, speed of train in kilometer per hour equal 45 kilometer per hour. Is it clear? Now question 7. Question 7 is, a train 150 meter long is running at speed of 72 kilometer per hour. Speed of the train 72 kilometer per hour. तो हमने इसको मीटर पर सेकेंड में बाय 5/18 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. It crosses a bridge in 13 seconds. ब्रिज को क्रॉस कर रहा है. Find the length of the bridge. So length of the bridge निकालना है. So it means that the bridge has some dimension. तो आप ट्रेन जब ब्रिज को क्रॉस कर रही है तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन क्या होगा? हमने पहले भी लिया था, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द bridge, because bridge has some dimension. So we will write, let the length of the bridge as x meter
cross a bridge, train will cover a distance. इसका ट्रेन का डिस्टेंस क्या था? 150 and this plus x. Okay, so it will be 150 plus x meter. ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं तो डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रेन, लेंथ ट्रेन की प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज, सिंस इट हैज डायमेंशन. नाउ अगेन इट्स अ डायरेक्ट वेरिएशन, डिस्टेंस एंड टाइम. अब देखिए व्हाट इज रिटन, स्पीड ऑफ द ट्रेन 20 मीटर पर सेकेंड. क्या मतलब हुआ? 20 मीटर 1 सेकेंड में कवर कर रहा है. तो 20 मीटर डिस्टेंस इन 1 सेकेंड. तो इतना डिस्टेंस 150 प्लस x 13 seconds. It is already written in the question. It crosses a bridge in 13 seconds. 13 seconds. Again direct variation. Solve करेंगे. You will get the value of x. X is 110 meter. So therefore, what will you write it? Therefore, length of bridge. Length of bridge equal 110 meter. Clear? जहां पे भी डायमेंशन दिया हुआ है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का, तो ट्रेन की लेंथ और स्टेशनरी लेंथ ऐड हो जाएगी टू फाइंड आउट इट्स डिस्टेंस. Question 8 is, how long will a train 120 meter long takes to clear a platform and its dimension is given 130 meter long if its speed is 50 kilometer per hour. Speed of the train is 50 kilometer per hour. अब देखिए यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज गिवन, डायमेंशन दिया है. तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ द ट्रेन plus length of the bridge, length of the platform. So length of the train given, length of the platform is given. It is given in the question. To clear a platform, train will cover a distance, इन दोनों का sum. ठीक है? So it will be 250. Now the speed of the train is again given in kilometer per hour. तो किलोमीटर पर आवर आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से. Multiply it with 5/18 to get the answer as 125/9. अब ये 125/9 मीटर पर सेकेंड क्या मतलब हुआ? इतने मीटर 1 सेकेंड में. सो डिस्टेंस एंड टाइम, इतने मीटर 125/9 मीटर 1 सेकेंड में. ओके, तो 250 मीटर कितने सेकेंड्स में? 250 मीटर, लेट द टाइम टेकन इज x. सो x आप यहां पे लिख लेंगे, लेट टाइम टेकन इक्वल x seconds. So again it's a direct variation. Solve, you will get it 18 seconds. तो क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ पर? In the question they have asked, how long will a train take to clear a platform? Therefore, time taken by train to clear a platform equal 18 seconds. Is it clear? बहुत आसान है क्वेश्चन if the concepts are clear to all of you. Question 9th. Question 9th is, a train 210 meter long took 12 seconds. Length of the train is 210 meter and after to pass a 90 meter long tunnel. Tunnel की length दिया हुआ है and the tunnel is fixed. Okay, it's a stationary and the length is given 90 meter. So distance covered by the train will be what? Length of the train plus length of the tunnel. So distance covered by the train will be length of the train plus length of the tunnel will be 300 meters. And further they have given that it takes 12 seconds. 12 seconds में train
distance cover कर रही है to cross a tunnel. So time is 12 seconds. So you have to find out the speed of the train. What is the formula of the speed of a train? Speed of a train. Speed is distance upon time, isn't it? Distance upon time. So distance is 300 upon time is 12. इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे. आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट 25 मीटर पर सेकेंड. 25 मीटर per second. So the speed of the train is 25 meter per second. अब अगर इसी को हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होता, so what we will do? मीटर पर सेकेंड को if we have to convert it in kilometer per hour, so we will multiply it with 18/5. Clear? Question 10th. I think you can able to try the question 10th yourself very carefully. ध्यान रखिएगा, if the stationary object having some dimension, तो ट्रेन की लेंथ में स्टेशनरी लेंथ ऐड हो जाएगी to get the distance covered by the train. और अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का डायमेंशन नहीं दिया हुआ तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन विल बी लेंथ ऑफ द ट्रेन. हमने ये बहुत अच्छे से we did it in the previous class. Okay, so I think you can able to do question 10th yourself. And remember, these questions are very important questions for your exams point of view. Clear? Okay. Thank you and have a nice day.